Hello friends, welcome to my YouTube channel, and topic of today's video is on HVAC, and we are going to look at role of pumps in HVAC. Pumps is an important element in HVAC system, central HVAC system. Pump एक important element है central HVAC system का, और we are going to look at pumps today. आपके सामने एक photograph है plant room का, and you can see multiple pumps being installed. Let us look at the role of the pumps. First important thing is circulation of water, cold water or hot water. Important thing is in HVAC system, central HVAC system, we need to transport the cold water coming from the chiller, evaporator to the respective AHUs, heat exchangers, TFAs और FCUs. ये काम करने के लिए pumps are important. To circulate the water, pumps की जरूरत होती है. So there are various types of circulation. One is chilled water pumps, जो cold water को circulate करता है AHU, FCU, TFA और heat exchangers में. Second pump is for condenser water pump. It circulates water to cooling tower. वो cooling tower तक पानी पहुंचाता है. And third is hot water pumps. Again, depending upon hot water coil or a boiler or a heat exchanger, ये उसी जगह पानी circulate करता है. Pump is an important element. कौन से पैरामीटर्स है पंप सिलेक्शन के? व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर पंप सिलेक्शन? वाटर फ्लो, हेड एंड वाटर टेम्परेचर. वाटर फ्लो क्या होना चाहिए, उसका हेड क्या होना चाहिए, और टेम्परेचर ऑफ वाटर. व्हाट आर जनरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर पंप्स एलिमेंट? केसिंग, इंपेलर और शाफ्ट एंड बेयरिंग. और एमओसी अलग अलग हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से. तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर एमओसीज. कौन से टाइप्स जनरली यूज होते हैं? इट कुड बी मेनी. इनलाइन पंप, स्प्लिट केसिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्प्लिट केसिंग, मोनोब्लॉक और बहुत सारी पंप्स है डिपेंडिंग ऑन इट्स एप्लीकेशन, इट्स कैपेसिटी, फ्लो, हेड और बहुत सारी चीजें होती है. सो दीज आर टाइप ऑफ पंप्स. व्हाट आर द पाइपिंग कनेक्शंस रिक्वायर्ड फॉर पंप्स? वी नीड बटरफ्लाई वॉल्व्स, इनलेट एंड आउटलेट दोनों चाहिए. वी नीड वाइस टेनर्स एट द इनलेट ऑफ द पंप्स. We need flexible bellows both sides because vibration transfer नहीं होना चाहिए. On the outlet side we have NRV. We need to have pressure gauge or test points and ball walls for drains or air vent. So ये arrangement होता है generally. Inlet में butterfly wall, strainer, flexible bellows, pressure gauge और DPT, pump. Outlet में again pressure gauge, DPT, flexible bellows, NRV, butterfly wall. So these are the piping connections of pump. You can see over here, pump, strainer, flexible bellows, butterfly walls, NRV, pressure gauge. Clear? जो मैंने इसमें दिखाया था, previous slide में दिखाया था और अभी जो slide दिखा रहा हूँ. Again, another view. अलग-अलग elements of piping are shown here. You can see over here, actual photographs. Thank you very much for your patient listening. Please subscribe my channel. Follow me on YouTube, Facebook, LinkedIn, ajazkazi.com. Thank you very much.